Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 10, Habitat, and today is its 6th lecture. So before moving on towards the lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So quickly answer, how do animals depend upon plants? Yes. एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, क्या क्या चीजें यूज करते हैं वो प्लांट्स से? वेरी गुड. दे यूज देयर ऑक्सीजन, दे यूज देयर फूड, दे यूज देम एज देयर फूड. वेरी गुड. ओके, नाउ टेल मी, व्हाट डू प्लांट्स नीड टू मेक फूड? अब प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? सनलाइट, एयर, वाटर and soil, warmth. Very good. Now tell me, what is an ecosystem? Quickly tell me, एक ecosystem हम किसको कहते हैं? A place where a habitat where animals and plants and all the environmental factors interact together, that makes up a ecosystem. Very good. Okay, my dear students, a place where animals live, that is their natural home, and that is called habitat. And when the animals and the plants and all the non-living factors like soil, water, air, they interact together, they make up an ecosystem. Very nice. Okay, my dear students, now on page number 81 there are student learning outcomes written. So quick, आज हम पढ़ेंगे briefly introduce what an ecosystem is. हमने ये प्रीवियस लेक्चर में इकोसिस्टम कवर कर लिया है, बट ऑन इकोसिस्टम टुडे वी विल मेक अ प्रोजेक्ट. So my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. God has created every living creature from water. Some of them creep on their bellies, some walk on 2 legs, and some walk on 4. God creates what he wills for God is surely able to do all things. So my dear students, Allah Ta'ala ने बेतहाशा जो है वो जानदार जो हैं वो पैदा किए हैं, उनको बनाया है, और कुछ जो हैं वो रेंगते हैं, कुछ को 2 टांगों पे चलते हैं, कुछ 4 टांगों पे चलते हैं, और अल्लाह ताला चाहे जो चाहे तख्लीक कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को उस पर कुदरत हासिल है. तो आपके इर्द गिर्द जितनी नेमतें हैं, जितने जानवर और पौधे हैं, ये सब अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सम प्री रीडिंग क्वेश्चंस. व्हाट बेनिफिट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स? आपको पौधों से कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं? Very nice. We get clean air, we get oxygen, and we get food. Very nice. What environmental conditions are required by plants to make their food? हमने अभी recap किया था कौन कौन सी environmental conditions जो हैं वो plants को चाहिए होती हैं अपना food prepare करने के लिए? Sunlight, air, water, soil, warmth. Very nice. Okay, my dear students, now quickly open page number 87 in your books. I hope everybody has opened page number 87. Now on your screen you can see project number 1 which is given on this page. So my dear students, for this project we will study the pond ecosystem. And the things that are required are magnifying glass, glass jar, notebook and pencil. So the things which you require to do this project are these things. And then what to do? Number 1, visit a nearby pond. Note the plants and animals you see there. Take the water of the pond in a glass jar. Observe the water using magnifying glass. Did you find any plant or animal in it? Make a chart of your observations and demonstrations in your class. So my dear students, अब आपको करना क्या है कि आपको अपनी टीचर के साथ, this is a supervised activity. I request the teachers कि आप किसी भी नियर बाय पॉन्ड का जो आपके स्कूल के करीब है, घर के करीब है, आप उसका जो है विजिट करें, और वहाँ पर आप देखें कि कौन कौन से जो है environmental factors वहाँ पे क्या क्या हैं, वहाँ पे कौन कौन से animals और plants आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको नोट डाउन करें. नेक्स्ट आप अपने साथ एक ग्लास जार लेके जाएंगे and fill the glass jar with the pond water. और फिर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करें कि क्या आपको उसमें कोई स्मॉल एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं वो नज़र आते हैं. इफ़ डू सो, मेक अ लिस्ट ऑफ देम एंड देन प्रेजेंट इट इन योर क्लास.
So my dear students, I cannot take you physically to the pond ecosystem, but I went to the pond ecosystem, took some pictures, and I can give you a pictorial tour. So my dear students, recently I visited this pond, और यहाँ मैंने आप खुद देखें कि यहाँ पे एनिमल तो मुझे एक फ्रॉग था जो नज़र आया, इसके अलावा देयर वर सम पॉन्ड वीड्स, इसके अलावा रॉक्स थे बहुत सारे, सॉयल थी, पानी था, एंड देन देयर वर सम एल्गी ओवर देयर, पानी के ऊपर जो फ्लोट करती है. आई ऑल्सो सॉ सम फिशेज इन द पॉन्ड. सो माई डियर स्टूडेंट्स, पॉन्ड्स जो होते हैं बेसिकली ये रिवर, स्ट्रीम्स, लेक, सीज और ओशन से बहुत छोटे होते हैं. दिस इज अ फ्रेश वाटर होती है विच इज सराउंडेड बाय लैंड, ज़मीन उसके चारों तरफ होती है और सेंटर में थोड़ा सा पानी होता है जो बारिश की वजह से या किसी भी वजह से जो है वहाँ इकट्ठा हो जाता है. और फिर जो है ये बहुत सारे एनिमल्स का और प्लांट्स का जो है वो घर बन जाता है, उनका हैबिटेट बन जाता है, विच ऑब्वियसली इंटरेक्ट एंड दिस बिकम्स अ पॉन्ड इकोसिस्टम. मैंने यहाँ पे कुछ मॉस्किटोज भी देखे थे विच वर फ्लाइंग ओवर देयर, कुछ ड्रैगन फ्लाइज भी थी यहाँ पर, कुछ मक्खियाँ फ्लाइज भी थी, कुछ बटरफ्लाइज भी थी. सो माई डियर स्टूडेंट्स, animals that I saw there were frog, mosquitoes, fish, and there were butterflies. So इस तरह के जो animals हैं मैंने वहाँ देखे थे. और plants जो हैं, there were no such very big plants over there. Grass थी वहाँ पर जो pond के आसपास land पे लगी हुई थी, and then there were pond weeds and algae, major plants prominent थे जो which I found over there, which you can also see on your screen. मैंने उनका चार्ट बनाया है, तो इस तरीके से आप इनको नोट डाउन करेंगे. Then next my dear students, I took the water from the pond, fill it up in the jar, और फिर मैंने उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है वो ऑब्जर्व किया. And I did find some small creatures inside it. मैंने कुछ बहुत छोटे छोटे एनिमल्स उसके अंदर देखे जो मूवमेंट कर रहे थे. नंबर 1 जो थे वो टेडपोल्स थे. टेडपोल्स आर बेबी फ्रॉग्स, ये फ्रॉग के छोटे बच्चे होते हैं. फ्रॉग लेज एग्स इनसाइड द वाटर, जो मेंढक होता है वो पानी के अंदर अपने अंडे देता है और उसके जो बेबीज होते हैं दे कम इन द वाटर, वो पानी के अंदर ही निकलते हैं एंड दे रिमेन इनसाइड देयर. ठीक है, पानी के अंदर ही कुछ अर्सा रहते हैं जब तक कि वो एडल्ट फ्रॉग ना बन जाए. तो टेडपोल्स लुक लाइक दिस. तो आई सॉ सम स्मॉल टेडपोल्स इनसाइड द जार. इसके अलावा मैंने कुछ और छोटे एनिमल्स भी देखे जो कि इस तरह के थे. उनको जब मैंने मजीद गौर से मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो दे वर मॉस्किटो लार्वा, यानी कि वो बेबी मॉस्किटोज थे. मॉस्किटोज ऑल्सो ब्रीड इनसाइड द वाटर. जहाँ पे भी कहीं पानी ज़्यादा होता है मॉस्किटोज जो हैं दे ले देयर एग्स इन द वाटर, और फिर उनका जो लार्वा यानी कि जो बेबी मॉस्किटो होता है वो पानी के अंदर कुछ अरसा रहता है एंड देन इट ग्रोज एंड कम्स आउट ऑफ द वाटर एज अ मॉस्किटो. तो मैंने मॉस्किटो लार्वा भी वहाँ पर देखा. एंड द फिश इनसाइड द पॉन्ड, जो पानी के अंदर मछलियाँ हैं वो डेफिनेटली दे फीड ऑन द टेडपोल्स एंड द मॉस्किटो लार्वा, ये उनका फूड होता है. सो दिस इज हाउ दे इंटरैक्ट, और जो है ये साइकिल चलता है एंड इट बिकम्स एन इकोसिस्टम. सो इसका जो है आपको एक चार्ट बनाना है. इसी तरह आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करें, एक चार्ट के ऊपर रिकॉर्ड करें, एक पेपर पे रिकॉर्ड करें और उसको क्लास में आपने प्रेजेंट करना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करें, अपनी टीचर के साथ बाहर जाएं या बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप टीचर के साथ जाएं. But there is a practice which you need to do. It is a worksheet given to you. Worksheet number 6. You will receive this worksheet by your teacher in printed form. So you will write down your name and your class on the worksheet. And then on the worksheet you can see pond habitat. आपको यहाँ पे pond habitat नज़र आ रहा है. कुछ animals हैं, कुछ प्लांट्स हैं, रॉक्स है, वाटर है. सो आपको करना क्या है, राइट डाउन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द पॉन्ड हैबिटेट. आपको पॉन्ड आप फिजिकली भी विजिट करेंगे, आपने पिक्चर में भी देखा, इसके अलावा आपके पास ये एक इधर भी पिक्चर है ब्लैक एंड वाइट, इसको कलर भी कीजिएगा. और लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं इस पॉन्ड के आपको वो राइट डाउन करने हैं, विच आर वेरी इजी. लेट मी डू द फर्स्ट वन फॉर यू. द लिविंग कंपोनेंट 1 इज फ्रॉग, आई कैन सी इट. And the non-living component is, आप living components में plants और animals दोनों लिखेंगे, and non-living is water. Write the rest by yourself. ठीक है? So this is how you will complete this worksheet. It is extremely easy.
Now we will move forward towards your evaluation. For this, you need to answer a few questions. Quickly define habitat. A place where plants and animals live naturally is called a habitat. Now, what is an ecosystem? An ecosystem is a place where plants and animals interact. जो उनका interact होता है, आपस में interaction होता है plants और animals का with their environment also, that is called an ecosystem. Now, what is the difference between habitat and ecosystem? अब आपने habitat भी पढ़ लिया है, ecosystem भी पढ़ लिया है, अब इनके दरमियान में आपको मुझे difference बताना है. ये मैंने आपको बताया हुआ है. This is extremely easy. This is not difficult. So habitat, number one, differentiate आप कैसे करेंगे? It is the natural home of plants and animals, whereas the ecosystem is the interaction between the plants, animals and their environment. ठीक है? So ecosystem interaction है और habitat जो है that is the natural home. Okay, my dear students, now is the time for your homework. Quickly note down your homework. For this, worksheet number 7 will be given to you by your teacher. You will write down your name and your class. First of all, you will do the fill in the blanks. Word bank is given to you and you will fill them in. The place where plants live, grow and reproduce is called there. Let me do the first one for you. Habitat. Okay. Next, you will do the fill in the blanks like this. Okay, now differentiate between an ecosystem and habitat. ठीक है? अब एक ecosystem और habitat के दरमियान आपको differentiate करना है. मैंने अभी आपको बताया है. You can easily do it by yourself now. Okay, my dear students, you will do this in the homework and then we will move forward towards the wrap-up. Habitat is the natural home or environment of an animal and plant where it reproduces, finds food and shelter. अब habitat जो है वो एक एनिमल या प्लांट का नेचुरल होम होता है जहाँ वो ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, रहता है, खाता पीता है. Whereas the ecosystem, an ecosystem includes all the living things in a habitat plus their surroundings plus all the ways in which they interact with each other. जबकि एक ecosystem एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर plants, animals आपस में जैसे interact करते हैं आपस में और with their environment, that is called their ecosystem. So my dear students, I hope you will enjoy the project और इसको बहुत फन तरीके से और एक्टिवली परफॉर्म कीजिएगा. आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा. Keep everybody around you safe. Have a good day and Allah Hafiz.